All district collectors in Rajasthan will take the COVID vaccine as the state launches the second phase of the COVID vaccination drive today. The second phase will include revenue officials, district collectors, police personnel and sanitation workers. It will see 2,40,000 people being vaccinated. 3,40,000 health workers vaccinated so far out of 5,40,000 registered beneficiaries. Rajasthan has done well in meeting targets, 63%. That's among the top 5 states in the country. वैक्सीन लगवानी चाहिए मैम, और खत्म होने का तो देखो जब तक 28 दिन बाद में दूसरी डोज लगनी है, उसके बाद में 15 दिन बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो इसके लिए हमें मास्क और लगवाना बहुत ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इतने पेशेंटों के टच में आते हैं तो जब खुद ही स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे वैक्सीनेशन होके तो फिर औरों का कैसे क्या करेंगे। Upscaling vaccination points has been one reason why Rajasthan has managed to do so well. When the rollout happened, vaccinations were given at 167 sites in the state. That has now increased to 1,000 centers where vaccinations can be given. We have been doing around ranging from 800 to 1,200 sites in a day. स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था तब हमारे को उन्होंने साइट्स फिक्स करी थी 167 तब करी थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वी गॉट कॉन्फिडेंस एंड जैसे जैसे हमने देखा कि इसके कोई मेजर AEFI नहीं है तो हमने इस साइट्स को बढ़ाया और आज की तारीख में अराउंड 1,000 साइट्स पर डे वी आर डूइंग. And with all district collectors the first to take the jab now, health department officials feel it will inspire other frontline workers to come forward as well. In Jaipur, Harsha Kumari Singh, NDTV. So the second phase of the vaccine rollout across Rajasthan, where frontline workers are now taking the COVID jab, to send a message across the state. District collectors and their officials have been asked to take it. Now I have with me ADM second Jagjit Singh ji. Jagjit Singh ji, हर जगह we are seeing that collectors and deputy collectors are taking it. क्या मैसेज है सरकार का? मैडम मैसेज ये है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी पर इसको वैक्सीनेशन किया जाए और उसका पार्ट मैं हूं और आज हम भी इसी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं. I also have with me Dr. Narottam Sharma. He is the CMHO of Jaipur. Dr. Sharma, we are seeing that Rajasthan is doing quite well, 64%. क्या मानते हैं सफलता क्यों है? Do you think कि हमने जो साइट्स हैं 167 तो भारत सरकार ने कहा था, बट आज की डेट में 1,000 साइट्स हैं अक्रॉस राजस्थान, ये एक वजह रही है? जी बिल्कुल, जब हमको लगा कि वर्कर जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो हमने साइट्स का साइट बढ़ाई हमने और लगभग आज हमारी साइट जयपुर के अंदर 300 साइट्स काम कर रही हैं जहाँ 150 लोगों का एक जगह साइट पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. इस कारण से हमारे तेज़ी से वैक्सीनेशन का प्रतिशत बढ़ा है और मुझे उम्मीद आने वाले दिनों में हम लगभग 80-90% अचीवमेंट कर लेंगे. So as of now, Rajasthan has 64% target achievement, which is actually among the top 5 best performing states in India. Now to send a message across, all district collectors today are taking the vaccination and other revenue officials as well with them, because there is a slight reluctance for health workers actually to come forward and take the vaccination. And actually in Jaipur alone about 48,000 health workers have not taken the vaccination really, and that is a cause of concern for health authorities. I have with me now Iqbal ji. He is the deputy collector of Jaipur and he has also just taken the vaccination. Iqbal ji, what is the message that we really want to send across, that all senior officials from the district collectorate are coming forward? Do you think it's a confidence building measure also when senior officials like you come forward and take the vaccination? Of course it's a confidence building measure, because when senior officers come and get themselves vaccinated, the message goes across that there's nothing to fear about the vaccine. All this hype and hyperbole surrounding the vaccine that it might not be effective or it might have some adverse effects is just a rumor. I mean, there's nothing to it, and people would do well to take precautions and get themselves vaccinated so that corona can be defeated.